बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। So sinusitis is a upper respiratory disorder. There are two types of respiratory disorder: upper respiratory disorder and lower respiratory disorder. So sinusitis is upper respiratory disorder. So sinusitis, inflammation of the nasal sinuses is called sinusitis. नसल साइनोसिस की इन्फ्लेमेशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। ये हमारे साथ मैक्सिलरी साइनोसिस है 1, 2 और ये हमारे साथ है फ्रंटल साइनोसिस। जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। Now what is cyanosis? Cyanosis are cavities or holes within a bone, especially within the face or skulls. There are 4 large sinuses, 2 inside the cheekbone, the maxillary sinuses, and 2 above the eyes, the frontal sinuses. ये sinuses basically holes होते हैं जो हमारे फेस में दो साइनोसिस हमारे फेस में प्रेजेंट होते हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम मैक्सिलरी साइनोसिस कहते हैं। और दो हमारे साथ ये आई के ऊपर स्कल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम फ्रंटल साइनोसिस कहते हैं। ये भी 2 इन नंबर है, इसको हम फ्रंटल साइनोसिस कहते हैं। Now the sinuses are linked with membranes that secretes antibody containing mucus. तो ये साइनोसिस बेसिकली म्यूकस को सिक्रेट करते हैं जो हमारे साथ इम्यूनिटी में अहम रोल अदा करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया वो इसमें ट्रैप होते हैं। This secretion protects the respiratory passage from the harmful substance in the air we breathe. Now the types of sinuses. Basically there are 2 types of sinuses: acute sinuses and chronic sinuses. Acute sinuses symptoms last 2 to 8 weeks. So this is acute sinuses. And chronic sinuses symptoms last much longer. So this is the types of sinuses. Now the causes of sinusitis. Causes of sinusitis: it is basically caused by bacteria, viruses, and allergic reactions. It can be caused by pollen or dust. So these are the causes of sinusitis. Environmental conditions are also involved in sinusitis. Dryness in home and office from dry air heating. So these are the causes of sinusitis. Now the symptoms of sinusitis. Main symptoms of sinusitis are fever, nasal obstruction, जब हमारी नोज बंद होती है इसको हम nasal obstruction कहते हैं। pus like nasal discharge, loss of smell, facial pain और headache सर दर्द को कहते हैं। entering of nasal fluid into the pharynx, red itchy watery eyes, sneezing, runny nose, sore throat. So these are the symptoms of sinusitis. Now the treatment of sinusitis. So if bacterial infection is present, antibiotics or sulfur drugs are usually prescribed. So if the infection is caused by bacteria, so basically we use antibiotics or sulfur containing drugs are used for it. Anti-allergic and decongestants are also used for treatment. So anti-allergic medicines are used for the treatment of sinusitis. And decongestants बेसिकली नाक में जो हम स्प्रे करते हैं इसको हम decongestants कहते हैं। So these are the treatment of sinusitis. So this is all about the upper respiratory disorder, sinusitis. Thank you.